हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू Kalinga IAS। तो आम जो काली जेठी एंड करथिले तो आमे तापुटू कंटिन्यू करिवा। आमे अमेंडमेंट देखुथिले अमेंडमेंट केमती प्रोविजन कोन कोन अछि अमेंडमेंट होबा पई अमेंडमेंट केमती करा जाय परियो जेंती प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दरकार होबो प्रायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नीडेड हुए ना अमेंडमेंट पई जरूरी नुहे तार वेरियस आमे प्रोविजन देखथिले लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट देन इंट्रोड्यूस द बिल केमती आमे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 मेंशन अछि द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट एटा हमें काली देखिथिले। तो बिल इंट्रोड्यूस कहीं भी करि परिबे एनी हाउस रे बिल इंट्रोड्यूस होई परिबो बोथ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा एंड एनी मेंबर करि परिबे नॉट ओनली द मिनिस्टर बट प्राइवेट मेंबर भी जे माने थिबे से माने मध्य कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करि परिबे आ सेति में प्रायर प्रेसिडेंट रो रिकमेंडेशन किछि आवश्यकता पड़े नै। आ बिल पास होआ पई बोथ हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी रो दरकार हुए। तो ये आम किसी बेसिक फीचर देखी प्रोविजन रे। नेक्स्ट वेरियस टाइप ऑफ मेजॉरिटी कौन था जमी सिंपल मेजॉरिटी के दरकार हुए के कंडीशन स्पेशल मेजॉरिटी देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये अलग अलग मेजॉरिटी थिला एंड डिफरेंट प्रोविजन कौन कौन मेंशन अछि ऑन द सिंपल मेजॉरिटी रे। नेक्स्ट सिंपल मेजॉरिटी विथ द हाफ ऑफ स्टेट एक्टिवेशन एंड द स्पेशल मेजॉरिटी। आज हमें देखिबा मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन हेइछि आज पन टोटल मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन होइछि तार किछि इंपोर्टेंट जगह परीक्षा रे आसुछि मैक्सिमम टाइम अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जेमति 73rd अमेंडमेंट कौन मेंशन अछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कौन विषय डिटेलली लिखा होइछि तो ता विषय हमें आज देखिबा। तो प्रथम एबे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक रिसेंटली होइछि नारी शक्ति वंदना योजना अभियान हिसाब रे जेडी कि 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराइछि फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा रे फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन पाई। तो सही भाया प्रथम अमेंडमेंट केबे हितला कॉन्स्टिट्यूशन रे नाइन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 दे हे जैतला हमर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 दे जेडी कि प्रथम एटी कोन हला ना 9 शेड्यूल तो 9 शेड्यूल एठी एड हला जेडा कि जुडिशियल रिव्यू हेई पर नथला प्रीवियस क्लास रे देखिथिले शेड्यूल रे जतबेले तो 9 शेड्यूल थिला जेडा कि जुडिशियल इम्यून थिला जुडिशियल रिव्यू रो सेटा इम्यून थिला तो 9 शेड्यूल को ऐड करला एटा इकोनॉमिक एम्पावर करला स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन विथ द एडवांसमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नो प्रोवाइड द सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स द फर्स्ट पीएम ये थिले जवाहरलाल नेहरू एडेड द 9 शेड्यूल तो एटी प्रथम 9 शेड्यूल टा ऐड हला 3 मोर ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन 19 ए जो फंडामेंटल राइट हमें 19 रे पढ़िथिले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छोटा स्टार्टिंग रे फंडामेंटल सत्ता स्टार्टिंग रे फंडामेंटल राइट थिला एटा चेंज हे करे छोटा अछि तो सेही फंडामेंटल राइट ए किछि रेस्ट्रिक्शन ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन टा एठी ऐड हेतिला एटा यूपीएससी रे मध्ये पचाइतिला यदि फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म मेनली 9th शेड्यूल का विषय लिखा हिछि ना विषय अंदर लैंड रिफॉर्म ऊपर एंड अदर लॉ इंक्लूडिंग इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू तो एटा जुडिशियल रिव्यू रो रेस्ट्रेंट थिला जुडिशियल रिव्यू एटी हेई पर नथला जुडिशियली इंटरवेन करि पर नथला यदि किछि भी लॉ एक्ट अमेंड यदि किछि भी करा जाय आ सेटा को 9 शेड्यूल रे ऐड करा जाय तो सेठी जुडिशियल रिव्यू हेई पर नथला तो सही कंडीशन ता ऐड हेइतला इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इज द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 तो एक्सटेंडेड करथला कोन ना जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट extended the jurisdiction of high court to the union territory high court of union territory jurisdiction ta ko seti extend करथिला provide the appointment of additional and acting judge to the high court रे appointment हला additional और acting judge high court रे appointment करा जे परियो जेतु high court member जेमति एबे 31 to 33 को extend करा हला including chief justice of india तो सेही बेले किछि सेठी acting judge तो डेकोरम को मेंटेन करिया पे हाई कोर्ट रे सेटा ऐड हेतिला फॉर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर द एक्टिंग प्रोविजन हैविंग कॉमन हाई कोर्ट होइबो आउ कोन एटा हेतिला एठी द कॉमन हाई कोर्ट होइबो फॉर 2 एंड मोर स्टेट वाज इंट्रोड्यूस दुईटा अधिक स्टेट रे कॉमन हाई कोर्ट मध्ये इंट्रोड्यूस करा हेतिला आउ एबोलिशन ऑफ एबीसीडी जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन द 14 स्टेट थिला प्रथम एबीसीडी रे डिवाइड करा हेतिला स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान रे प्रोविजन बेसिस रे तो सेटा बे चेंज हला डिफरेंट स्टेट अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आस्तिला जेडी कि एबीसीडी जो प्रोविजन बेसिस थिला ताको एबोलिश करा गला आउ 14 टा स्टेट हला आउ 6 टा यूटीज तयारी हेतिला तो सही एटा एबोलिशन करथिला क्लासेस जो डिवीजन ऑफ क्लासेस एबीसी रे हिसाब रे तो साटको एबोलिशन करी 14 टा स्टेट
आ 6टी यूनियन टेरिटरी बेसअप करा गला सेटअप करा गला then in the 9th constitutional amendment act, that is the adjustment of the union territory as a result of India Pakistan जेतु सतो India Pakistan भितरे एग्रीमेंट हेतला 1958 रे तो सेती एडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरी जो टेरिटरी थिला ताकू एडजस्टमेंट करा हेतला थो द 9th constitutional amendment act 1960 then in the next important is the 14th constitutional एठी हला 1962 पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट करा गला इंडियन यूनियन रे आ पुडुचेरी एज द स्टेट स्टेटस हला 1987 रे बट पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट करा हितला इन द 14th constitutional amendment act 1962 बट सेला सॉरी एटा रॉन्ग एटा गोवा सॉरी इज गोवा ऐड हितला इज गोवा ऐड हितला स्टेट स्टेटस पाइला इन 1987 Next in the 24th Constitutional Amendment Act, important था 24th Constitutional Amendment Act, जेठी affirmation power of Parliament to amend any part of the Constitution, including the fundamental right सहित any part of the Constitution को amend करी परिवे Parliament चाहिए Parliament can amend any part of the Constitution तो सेथिबे से आनिथिले 24th Constitutional Amendment Act आसी 24th Constitutional Amendment Act रे प्रेसिडेंट बाउंड थिले एसेंट दोआ पई ऑन द Constitutional Amendment Act रे बिल रे जति भी constitutional बिल अछि सेठी प्रेसिडेंट गिव द एसेंट सेथिबे से बाउंड थिले मेड इट कंपल्सरी बनै देले प्रेसिडेंट को टू गिव एसेंट टू द Constitutional Amendment Bill जनरली प्रेसिडेंट रो काम कोन आइदर सी एसेंट करिवे बिल को नने विथहेल्ड करिवे और रिकमेंडेशन पई पठांती आउथरे प्रीवियसली आउथरे विचार करिया पई आ लोकसभा किंबा राज्यसभा को तक आउथरे इंट्रोड्यूस करा जाय आउथरे किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यदि पास होबो सेडी से एसेंट देवा पई बाध्य एटा ऐड हितला फॉर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पचर दिए इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट it is compulsory there is a provision made compulsory for the president to give assent for constitutional amendment bill so it is the 24th constitutional amendment act 1971 So 24th is important. Then 26th Constitutional Amendment Act. It is किछ नथला प्रेभी पावर्स रो गुटे प्रोविजन थिला ताको एबोलिश करा गला एंड प्रिंसली स्टेट कांसेप्ट को प्रिविलेज टू द फॉर्मर रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट को जो मिलुतला ताको एटा एबोलिश कर दिया गला. Then 36 गुटे इंपोर्टेंट 36 प्रोविजन जेडी सिक्किम को जे फुल फ्लेज स्टेट रो मान्यता मिलतला मेड सिक्किम ए फुल फ्लेज स्टेट. तो 36 इंपोर्टेंट केउ प्रोविजन रे केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे सिक्किम को गुटे फुल फ्लेज स्टेट रो आख्या मिलला इन द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 जेडी की मेड सिक्किम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड ओमिटेड द 10th शेड्यूल. नेक्स्ट इंपोर्टेंट सबुटो दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which is also known as mini constitution ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आख्या मिली थाए. एड 3 न्यू वर्ड एटा में देखिथिले प्रीएम्बल रे एड हेची दैट इज सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल रे तीनटा वर्ड एड हला दैट इज सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी और फंडामेंटल ड्यूटी ता एड हला अंडर द सोल्सिंग कमिटी रिकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटी ता मध्ये एड हेथिला अंडर सोल्सिंग कमिटी रिकमेंडेशन रे सेठी के को समय के थिले ना इंदिरा गांधी थिले से समय रे इंदिरा गांधी थिले. So in the part 4 रे फंडामेंटल ड्यूटीज का ऐड हला एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल मध्ये एटी ऐड हेतिला जेटा में प्रीवियस क्लास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे देखथिले दैट इज हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड अंडर 39A participation of worker in the management of the industry article 43A and the protection of the environment and forest under article 48A. तो ये चारटा प्रोविजन डीपीएसपी रे मध्ये ऐड हेतला फॉर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एटा बहुत इंपोर्टेंट 42nd तो बहुत क्वेश्चन आछि तो तीनटा न्यू प्रोविजन ऐड हेतला प्रीएम्बल रे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एंड फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हला एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज न्यू इन द पार्ट 4A एंड एडेड करथला चारटा प्रोविजन इन द डीपीएसपी दैट इज द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मानकर अंडर 39 लीगल एड प्रोवाइड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करा जिवो 39A रे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मानकर पार्टिसिपेशन रहइबो जंती वर्कर यूनियन सेटअप करा जाई परिबो तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज रे ऑन 43A एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द 48A. नेक्स्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एटी कोनला ना रिप्लेस द टर्म एटी इमरजेंसी रिलेटेड किछि चेंज हितला
तो इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी समय तो इंदिरा गांधी गला आफ्टर द टेन्योर तो गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होला सेठी किछि चेंजेस आनिथिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे तो मेन चेंजेस आस्थिला इमरजेंसी रिलेटेड जो इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस टाको बाय आर्म रिबेलियन प्रीवियसली जो इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा होतला जनरली तीनटा कंडीशन वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला नेशनल इमरजेंसी केही भी पार्लियामेंट चाहिबो नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबे ऑन द ग्राउंड ऑफ जदी वार कंडीशन हेतिबो देश रे वार चलथिबो किंता इंटरनल एग्रेशन थिबो किंबा आर्म रिबेलियन थिबो सो सेही कंडीशन रे वार एक्सटर्नल एग्रेशन जदी थिबो और आर्म रिबेलियन रे इमरजेंसी रो प्रोविजन अछि अंडर आर्टिकल 352 तो प्रीवियसली सेटा थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस परे ताको चेंज हला आर्म रिबेलियन रे made the president declare national emergency only on the written recommendation of the cabinet केवल कैबिनेट रो written recommendation देले ही प्रेसिडेंट लगै परिबे इमरजेंसी प्रीवियसली ओनली प्राइम मिनिस्टर जदी कहि दउतले तो इमरजेंसी लगाओ बोली लागि जाउतला और निज इच्छा लगै पड़तले किंतु एबे कैबिनेट रो फुल रिटन रिकमेंडेशन दबो कैबिनेट लिखि कर देले ही इमरजेंसी लागू ही परिबो तो एटा ऐड हेतला अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रीवियसली ओएस रे पचारतला केउ ग्राउंड कहारो रिकमेंडेशन दरकार हुए ना नहीं जे प्रेसिडेंट को निज इच्छा दे परिबे या काउंसिल मिनिस्टर रिकमेंडेशन दरकार हुए ना नहीं तो अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे रिकमेंडेशन दरकार हुए मेड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट रो रिटन रिकमेंडेशन परे ही से डिक्लेयर करि परिबे इमरजेंसी देन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एटा में देखि छै राइट टू प्रॉपर्टी टा डिलीटेड हला एबे सेटा लीगल राइट है छै अंडर आर्टिकल 300 ए प्रीवियसली सेटा फंडामेंटल राइट थिला अंडर आर्टिकल 19 तो एबे सेटा लीगल राइट है छै डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कराई छै फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए later on provide that the fundamental right guaranteed by article 2021 cannot be suspended during national emergency article 19 हमें बहुत देखा छै दुईटा क्लास से बार-बार कहि जे article 19 टा ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाय during the national emergency but article 20 and 21 suspended हुए नहीं during the national emergency तो the 44th constitutional amendment act रे ए सब ऐड हेतिला next 52nd constitutional amendment act एटार गुटे इंपोर्टेंट प्रोविजन आस्थिला एंटी डिफेक्शन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रे एंटी डिफेक्शन यदि केही भी पार्टी गुटे पार्टी रु जीती आ गुटे पार्टी को शिफ्ट कर जे आ गुटे पार्टी को पळेबे लेट्स से बीजेपी रु जीती जे से कांग्रेस को पळेला किबा कांग्रेस रु जीती बीजेपी को पळेला तो सते बार से व्यक्ति ऊपर एंटी डिफेक्शन लागि थाई तो एटा दिए के स्पीकर रो डिसीजन दिए स्पीकर से पार्टी रो डिस्क्वालिफाई करि परिबे स्पीकर चाहिए सही मेंबर को डिस्क्वालिफाई करि परिबे अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1958 एटा ऐड हेतला एटा शेड्यूल 10 रे मध्ये मेंशन अछि शेड्यूल 10 जे डिस्क्वालिफिकेशन करा जी परियो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एटा ऐड हेतला इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा किए देई परिबे स्पीकर रो दरकार एठी मत नेक्स्ट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1989 एठी कोन हला ना एज टा को रिड्यूस कराला जो वोटिंग एज प्रीवियसली 21 थला एबे ता को रिड्यूस करी 18 इयर्स को कर दिया छै तो रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स so it is mentioned in the 61st constitutional amendment act 1989 then important provision is the constitutional amendment is the 69th constitutional amendment act 1991 सेठी कोन ना दिल्ली को एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी रो आख्या मिलला एडेड द स्पेशल स्टेटस मिलला कहा को यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को बाय डेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ताको एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रो आख्या मिलला अंडर द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द अमेंडमेंट मे प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ 70 मेंबर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिबे तो टोटल रहिबे 70 मेंबर रहिबे लेजिस्लेटिव असेंबली रे और 7 जन मेंबर रहिबे 10% रूल हिसाब चलियो तो 10% मेंबर तंको रहिबे जदि 7 जन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे दिल्ली रे नेक्स्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज द एडेड द न्यू फीचर इन पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11 दैट इज पंचायत क्रिएशन ऑफ द पंचायत ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एटा केबे इंप्लीमेंट हेतला ऑन 1993 अप्रैल आई थिंक तो सेठी एडेड हला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला तो पंचायत राज पीआरआई को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को आउ एडेड करथला न्यू पार्ट दैट इज पार्ट 9 दैट इज 29 टा फंक्शन मेंशन अछि ऑन 11 शेड्यूल
11 शेड्यूल रे 29 टा फंक्शनमेंट अछि ऑन द पंचायत एटा एड हितला फॉर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अताको इंप्लीमेंट करा हितला 1993 रे सिमिलरली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल ओके तो पंचायत आल्सो मेंशन इन द आर्टिकल 14 डीपीएसपी तो प्रीवियसली एटा आर्टिकल 40 डीपीएसपी रे मध्ये एटा मेंशन थिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ए गांधीयन प्रिंसिपल नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखले एठी ऐड कोन हला म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला एड हला पार्ट 9 ए प्रोटेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडी दैट इज म्युनिसिपैलिटी अवॉर्डेड हला न्यू फीचर दैट इज 12th शेड्यूल एठी मने रखिबा केटा फंक्शन अछि केटा फंक्शन रे से काम करि परिबो अंडर 29 फंक्शन अछि आ म्युनिसिपैलिटी रे 18 फंक्शन अछि एड हला पार्ट 9 रे ए रे Then 84th Constitutional Amendment Act that is extend the ban of the readjustment of the seat of Lok Sabha and the state legislative assembly for another 25 years extended कर दला the ban up to 2026 पर्यंत जेमति recent पर सब नेक्स्ट डेलिमिनेशन केबे बसिबो अंडर 2026 रे सेतेबेला कॉन्स्टिट्यूशन आउथरा हम सीट एलोकेट ता चेंज होबो कॉन्स्टिट्यूएंट जेमति डेलिमिनेशन कमिशन बसथाय प्रति 10 वर्ष जनरली सेंसस परे प्रति 10 वर्ष रे डेलिमिनेशन कमिशन आस्थाय तो देखिबा पे जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोक हम जनरली सीट एलोकेटेड हिच इन द लोकसभा राज्यसभा इन द लेजिस्लेटिव असेंबली रे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के जगह रे पॉपुलेशन हिसाब रे हम सीट एलोकेटेड हिच तो सही सीट एलोकेटेड चेंज करियो जेमति 545 मेंबर अछंती एबे तो सही 545 टाको चेंज करिवे अब नेक्स्ट डेलिमिनेशन कमिशन बसिबो अंडर इन ईयर 2026 रे तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट इज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एठी तीनटा जगह रे चेंज करथिला बहुत थर कहलिनी तीनटा जगह चेंज हेतिला एठी तो मेड हला फंडामेंटल राइट रे यूपीएससी रे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रे फंडामेंटल राइट रे एड हला आर्टिकल 21A इट इज एड हला राइट टू एजुकेशन free and compulsory education up to the age of 14 अब डीपीएसपी रे एड हला चेंज हला आर्टिकल 45 जो प्रीवियसली आर्टिकल 45 थिला ताको रिटर्न चेंज हला एबे एठी ईयरली चाइल्डहुड केयर मिलिबो अप टू द एज ऑफ 6 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रे एड हला नुवा फीचर दैट इज 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी एड हला जेठी कुआ हितला दिस द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और द गार्डियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल so this is 86th amendment act next 89 constitutional amendment act जेटी कोन हला ना बाइफरकेट कर दिया गला जेटा प्रीवियसली थिला नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इनटू टू सेपरेट बॉडी दुईटा प्रीवियसली सेटा गुटे बॉडी थिला नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे सेटा को दुईटा सेपरेट बॉडी रे अलगा कर दिया गला नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब into two separate bodies करा गला नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 338 एंड 338A तो रिसेंटली फॉर द 102nd अमेंडमेंट एक्ट रे नेशनल कमिशन बसची ऑन द नेशनल कमिशन ऑन बैकवर्ड कास्ट रे तयारी हला ताको जे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नथिला जेमति नेशनल कमिशन ऑफ एससी एंड एसटी रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थिला 338 एंड 338A रे सेमति एबे नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को अंडर अमेंडमेंट 102nd रे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ताको दिया गला अंडर आर्टिकल 338B नेक्स्ट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 तो एटी क्रिएशन कोन हला ना नुवा एड हला कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी रो जेटा कि फंडामेंटल राइट मध्ये मेंशन अछि दैट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 रे राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव मध्ये एज ए फंडामेंटल राइट हिसाब रे मेंशन अछि Next, it included the new directive principle of the state policy on the cooperative society ro edala and part 9B madhya edala in the constitution the cooperative society. So 97 constitutional amendment act re tinta jinsa hala pratham tha part 9B edala the new directive principle edala jeti promotion kara jibo cooperative society and article 19 re hala the cooperative society je fundamental right re madhya mention achi. Next
99 Constitutional Amendment Act এটা NJSA related formation of National Judicial Appointment Commission, that is NJSA, National Judicial Appointment Commission. गोटे कमिशन प्रिपेयर करा जिवो जेडी किछ मेंबर थिबे, जे मन के एग्जीक्यूटिव मेंबर थिबे, जुडिशियरी मध्य मेंबर थिबे, जे मेंबर माने डिसाइड करिवे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि हेबो अपॉइंटमेंट रे जजेस रो अपॉइंटमेंट रे जजेस मान कर अपॉइंटमेंट पई गोटे कमिशन ऑफ फॉर्मेशन हेतिला जेडी नेशनल कमिशन फॉर जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन जेटा कुकी सुप्रीम कोर्ट नॉल एंड वॉइड कर देला. Note on, in 2015 the 5-judge constitutional bench 4:1 rested a majority opinion that collegium system and struck down the NJSA. हम जुडिशियरी अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम था थर्ड जज केस जो अछि, तो थर्ड जज केस रे हमें कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करू. कॉलेजियम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिबे आउ 4 जन सीनियर मोस्ट जज थिबे, तो से माने रिकमेंड करिवे नेक्स्ट जज रो अपॉइंटमेंट किए नेक्स्ट जज हबो, तो तांकर सही रिकमेंडेशन को में ई सिस्टम को में कॉलेजियम सिस्टम बोली कहताउ. तो एनजेएसए एक्ट जो एग्जीक्यूटिव आनिथिले एनजेएसए एक्ट तो ताको सेटा नॉल एंड वॉइड कर दिया गला अंडर 2015 अंडर इन 2015 रे आउ कॉलेजियम सिस्टम जो प्रीवियसली चालुतला से कॉलेजियम सिस्टम ता को कंटिन्यू करा गला. तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ता को नॉल एंड वॉइड कर दिया गला. नेक्स्ट इटली कहै नेक्स्ट 100 तो सेटा अछि जस्टिस केयर ओपिनियन कोन थिले. जस्टिस केयर कोन कहिथिले ना द एक्सेप्शन ऑफ द जुडिशियरी इज टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन. जुडिशियरी इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट. तो हम राइट टू सिटीजन को प्रोटेक्ट करथै जुडिशियरी. ओनली कैन बी एंश्योर सेटा एंश्योर होई परिबो जेतले जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहिबो, जुडिशियरी रो इंडिपेंडेंस मेंटेन होबो. जे जुडिशियरी जेमति केही भी एग्जीक्यूटिव रो मेंबर या बाहर केही मेंबर सेठी पार्टिसिपेट न करथुबे, तो सेतले इंडिपेंडेंस जदि मेंटेन होई परिबो तबे से प्रोटेक्ट राइट गार्डियन हिसाब रे मेंटेन करि परिबो फंडामेंटल राइट को बाय कीपिंग एब्सोल्यूट इंसुलेटेड या इंडिपेंडेंट बनेबा फ्रॉम द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. द प्रपोज द एनजेएसए वायलेटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. तो सेति भाई एनजेएसए टा जेतु वायलेट करथला द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, तो सेति 2015 तक नॉन एल वॉइड कर दिया गला. तो क्वेश्चन पचारथिला केबे सेटा को नॉन एल वॉइड कर दिया गला, इफेक्ट केबे हला 2015, बाकी एकटा थिला 99 2014 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 एसरे तो एटा पचारिथिला रिसेंट एस एग्जाम. नेक्स्ट इन द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 इट इज रिलेटेड टू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हेतिला बांग्लादेश सहित इंडियन बांग्लादेश भितर जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हेतिला, तो सेटा मेंशन अछि सेटा ऐड हेतिला अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 हिसाब रे बिटवीन द इंडियन बांग्लादेश. नेक्स्ट 101st Constitutional Amendment Act 2017 that he add हला कोन GST इंप्लीमेंट हला जुलाई मासरु 2017 डेटा इंप्लीमेंट हला. एटा GST टा ऐड हेतला अंडर 101st Constitutional Amendment Act included good and service tax at the country from the 1st July 2017. good and service tax one type of destination based tax टा जो इनडायरेक्ट टैक्स जतकी भी थिला VAT थिला सेल टैक्स थिला सब इनडायरेक्ट टैक्स को मिसई करी गुटे टैक्स सिस्टम आसिला दैट इज द जीएसटी जेडी कि अलग अलग टैक्स स्लैब हिसाब से रख देले किछि को 5% किछि को 18% किछि को 28%, तो अलग अलग टैक्स स्लैब रे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को रखा जायतला. तो सेटा ऐड हेतला अंडर द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स टा अंडर 101st Constitutional Amendment Act. Then in the 102nd Constitutional Amendment Act जेटा एबे कहली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलिला थ्रू द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट जो बैकवर्ड कास्ट पे नेशनल कमीशन ताको स्टेटस मिलिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. सिमिलरली इन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 रे प्रोवाइड मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस मन को 10% रिजर्वेशन क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिलतला ना इट इज इन द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 103rd Constitutional Amendment Act स्पेशल स्टेटस मिलतला. इन द 104th तो रिजर्वेशन को और एक्सटेंड करा गला जो एससी/एसटी रिजर्वेशन अछि एससी/एसटी रिजर्वेशन सीट फॉर एसटी/एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर ताको एक्सटेंड करा गला. कितना नंबर आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल 330 इन द लोकसभा रे मेंशन अछि एससी/एसटी को रिजर्वेशन, तो सेटा को सेटा एक्सटेंड करा गला. नेक्स्ट इन द 105th Constitutional Amendment Act that is exempted the state government from consulting the National Commission for Backward Class with regard to the representation and maintenance of the list of socially educationally backward class SCBC for their own purpose.
तो ये स्टेट गवर्नमेंट निज हिसाब से एससी एसटी मान को बनै पारे एग्जम्प्टेड करा गला छाड़ी दिया गला एससी स्टेट गवर्नमेंट को फॉर कंसल्टिंग द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड कास्ट तो नेशनल जो स्टेट गवर्नमेंट अच्छी सी नेशनल कमिशन बैकवर्ड कास्ट को मागिबनी रिकमेंडेशन किसी दरकार नहीं ऑन दी मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ सोशली एजुकेशनली एससीबीसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मानकर इंट्रोडक्शन दे इन द लिस्ट रे तो क्यों लिस्ट माने लिस्ट रे किए किए आसीबे एससीबीसी रो लिस्ट रे क्यों कैटेगरी रो व्यक्ति माने एससीबीसी रो लिस्ट रे आसीबे तो सेति स्टेट गवर्नमेंट आउ एनसीबीसी रो दरकार पड़िबो नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास को दरकार पड़िबोनी अंडर द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 then 2021 then 106th constitutional amendment act 2023 एटा रिसेंटली एजी जेडी की 1/3 सीट रिजर्व रहिबो फॉर वुमेन मान को इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जेडी 1/3 सीट रिजर्वेशन रहिबो जेडी की केवल मिलुथला पंचायत लेवल ले थिला 1/3 सीट रिजर्वेशन जेडी की ओडिशा गवर्नमेंट जेडी 50% रिजर्वेशन मिल दउची वुमेन रिजर्वेशन 50% रहउची इन द पंचायत रे ओडिशा रे बट 33% रिजर्वेशन मेंशन अछि वुमेन मान को दिया जिवो ऑन पंचायत रे तो सिमिलर प्रोविजन एडेड हेतला ऑन द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जेडी की 1/3 रिजर्व सीट रिजर्व करा जिवो फॉर वुमेन मान को इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ कौन चेंज होता रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन थिला नेक्स्ट आमे देखिबा इमरजेंसी प्रोविजन डिफरेंट इमरजेंसी प्रोविजन जेरे कि मेंशन अछि ऑन द आर्टिकल 322 टू 352 टू 360 352 टू 360 जो मेंशन अछि ऑन द पार्ट 18 तो इमरजेंसी प्रोविजन टा हमें बोरो केडू करछे इट इज बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे इमरजेंसी प्रोविजन बोरो करा हिची जेडी की जनरली इमरजेंसी हेले कोन होला ना ऑल द एक्शन ऑफ द स्टेट हो पर्टिकुलर वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट रो एक्शन टा जहां भी तार एग्जिट अच्छी लिस्ट सब्जेक्ट रे एक्शन करबा थाई तो सब डिसीजन नबो की ना सेंटर डिसाइड करि थाई सेडी सेंटर मेन पावर ही जाय स्टेट टा पार्टा कमी जाय थाई थी एटा इमरजेंसी प्रोविजन रे अछि कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन जो हमर फेडरल स्ट्रक्चर अछि फेडरल बोथ सेंटर एंड स्टेट इंडिपेंडेंट अछंती इन देयर फंक्शन जेमति 7 शेड्यूल ले मेंशन अछि डिफरेंट लिस्ट 7 शेड्यूल ले डिफरेंट लिस्ट जेमति स्टेट लिस्ट अछि सेंट्रल लिस्ट अछि एंड द कॉन्करेंट लिस्ट अछि तो डिफरेंट लिस्ट हिसाब से डिफरेंट जुरिसडिक्शन अछि स्टेट रो सेंटर रो और कॉन्करेंट लिस्ट बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंटर सब भूमिका सेंटर ही करथाय बो स्टेट रो एक्शन जहां भी सेटा मध्ये सेंटर ही नहीं थाय तो सेटा कन्वर्ट कर दिए से फेडरल स्ट्रक्चर टाको यूनिटरी वन डे तो यहाँ बड़ कराई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जनरल आम देखी सारे के जिते इमरजेंसी हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए से फंडामेंटल राइट दा सस्पेंडेड हो जाए तो आम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली जापरूनी ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी समय जे आमर किसी राइट जदि सस्पेंड थाए तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी एटा बोरोकेट कराइतला फ्रॉम द वेबनर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज जर्मनी फ्रॉम द जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा बोरो होइतला जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो होइतला जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जेमते आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए पर हमें देखले प्रीवियसली आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंडेड हुए नहीं तो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो मेनली तीनटा आर्टिकल अछि दैट इज आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करबो कंडीशन कोन ना वार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन तीनटा कंडीशन दे थ्री ग्राउंड अछि फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी war external aggression and armed rebellion war external aggression and armed rebellion एटा तीनटा ग्राउंड अछि तीनटा ग्राउंड रे हमें डिक्लेयर करि परिबा नेशनल इमरजेंसी को अंडर आर्टिकल 352 समथिंग लाइक आर्टिकल 356 रे इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी इन द स्टेट तो एटा जनरली प्रेसिडेंट रूल जेटा हमें कहिथौ जे प्रेसिडेंट यदि गवर्नमेंट रिकमेंड करिवे पर्टिकुलर स्टेट रे लगेबा पई गवर्नमेंट सॉरी गवर्नर रिकमेंड करथांती प्रेसिडेंट को
गवर्नर रिकमेंड करेंगे क्या ना प्रेसिडेंट को जब ए स्टेट रे पर्टिकुलर स्टेट रे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से फॉलो कराऊनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से चलुनी इमरजेंसी ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से काम करूनी तो सही कंडीशन रे मध्य सेठी लगी पारिबो इमरजेंसी आर्टिकल 356 जेरा को हमें प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी बोली मध्य कहि थाउ जनरली दुईटा कंडीशन स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लागि थाए तो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 जदि सेंटर रो जहां भी ऑर्डर थिबो जे सेटा ठीक से फॉलो करिवोनी स्टेट तबे मध्य प्रेसिडेंट रूल लागू होइता जेमति इच स्टेट दैट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन ऑफ द सेंटर यदि सेंटर रो डायरेक्शन को जदि ठीक से फॉलो न करा जिवो सेही कंडीशन में मध्य प्रेसिडेंट रूल और स्टेट रूल टा लागि थाए एंड द लास्ट इज द आर्टिकल 360 दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी जदि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हे जिवो देशर तो सही समय रे मध्य फाइनेंस इमरजेंसी लागू होइता तो सही कंडीशन हम तब कहि दो फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यदि न रहिबो क्रेडिट ऑफ इंडिया तो सही कंडीशन में फाइनेंस आर्टिकल 360 हिसाब रे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा जाय बाकी आज कोन हमर केबे मध्य फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होइनी डिस्पाइट 2018 इकोनॉमिक क्राइसिस थला मोरे मध्य सेतबे भी हमर लागू हेइ नथिला नेक्स्ट हमें देखिबा एबे नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन तो कहली वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन आर द थ्री ग्राउंड तो डिसाइड के करिवो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ही हबो प्रेसिडेंट कहबो बट प्रेसिडेंट निज इच्छा रे कहबो कि ना ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट written recommendation from the cabinet कैबिनेट रो रिटन रिकमेंडेशन परे ही प्रेसिडेंट लगै परिबे नेशनल इमरजेंसी को तो जनरली एटा दुई प्रकार उटेला एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड द इंटरनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी का को जीवो यदि वार हे जाय किबा एक्सटर्नल एग्रेशन हुए तो सही कंडीशन को हमें एक्सटर्नल इमरजेंसी से बेले इंटरनल इमरजेंसी रिलेटेड टू आर्म रिबेलियन जेटा हमें देखले प्रीवियसली आर्म रिबेलियन नथला इंटरनल डिस्टरबेंस थिला परे सेटा चेंज हला थ्रो आर्म रिबेलियन को अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आइदर एटा गुटे पर्टिकुलर गुटे जगह गुटे स्टेट लागि परिबो या स्पेसिफिक जगह लागि परिबे माने पूरा देश रे मध्य लागू होई पारिबो 44th रे हमें देखले 44th एटा चेंज हला प्रथम सेटा आर्म रिबेलियन सॉरी इंटरनल डिस्टरबेंस थिला सेटा परे आर्म रिबेलियन रे चेंज हला अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रीवियसली जेटा इंटरनल डिस्टरबेंस थिला रिप्लेस्ड विथ द आर्म रिबेलियन तो एटा को चेंज हे करिबे आर्म रिबेलियन को चेंज हला नेक्स्ट रोल ऑफ द कैबिनेट जेमति कहली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन द रोल ऑफ सेमति किछि मेंशन नथिला फॉर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटी कोआ गला जे रिटन रिकमेंडेशन दरकार प्रेसिडेंट रो सॉरी कैबिनेट रो रिटन रिकमेंडेशन दरकार प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम करि परिबो ओनली आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट रो रिटन रिकमेंडेशन परे ही सेठी लागू हेई पारिबो नेशनल इमरजेंसी लगै परिबे देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 मास भितरे पार्लियामेंट्री अप्रूवल बोथ हाउसेस रे पास होबा दरकार तो सेटा 2 मास टा प्रीवियसली थिला ओरिजिनली सेटा मेंशन थिला 2 मंथ 2 मास भितरे बोथ हाउसेस रे एटा पास होबा दरकार बट चेंज कर दियाला थ्रो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा चेंज हला जे गुटे मास भितरे अप्रूव बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ तो गुटे मास भितरे बोथ हाउसेस रे एटा अप्रूव होबा दरकार अप्रूव विद इन 1 मंथ हिसाब रे सेटा बोथ हाउसेस रे अप्रूव होबा दरकार then if the proclamation of emergency issue at the time of लोकसभा यदि डिजॉल्व थिबो तो सही गुटे मास भितर राज्यसभा रे पास होबो देन लोकसभा यदि बसिबो तापर लोकसभा रे पास होबो देन केउ प्रकार मेजॉरिटी दरकार ना प्रथम एटा मेंशन थिला सिंपल मेजॉरिटी रे हेई पारिबो सिंपल मेजॉरिटी रे पास करा जाय पारिबो बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे इट इज स्पेशल मेजॉरिटी रो कांसेप्ट आसिला स्पेशल मेजॉरिटी दरकार फॉर द अप्रूवल मतलब 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट थिबे एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट करिवे वोटिंग रहिबे इन दैट फेवर रे तबे जाय करी नेशनल इमरजेंसी लागू हेई पारिबो अंडर स्पेशल मेजॉरिटी नॉट ऑन द सिंपल मेजॉरिटी प्रीवियसली सेरा सिंपल मेजॉरिटी थिला बट एबे सेरा स्पेशल मेजॉरिटी को चेंज हेछि तो ड्यूरेशन ना ओरिजिनली once approved यदि थोरे आपको approved हे गला emergency could remain as long as executive desire जते दिन पंत executive चाहिबे ताको extend करि परिबे बट एबे सेटा 44th रे जनरली 44th ता 42nd परे 44th आस्तला आफ्टर इमरजेंसी 1975 पे इमरजेंसी लागिला तो इमरजेंसी परे गवर्नमेंट चेंज हला पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आस्तला तो मेनली इमरजेंसी रिलेटेड किछि भी क्वेश्चन आसले मैक्सिमम टाइम रे 44th अमेंडमेंट ता आंसर हेई थाय
तो 44th अमेंडमेंट ला चेंज करला कोन ना एवरी 6 मंथ रे प्रति 6 मास रे ताको एक्सटेंड करिया को पड़ियो पार्लियामेंट रे पास हो पड़ियो एक्सटेंडेड इनडेफिनाइटली जते दिन पर्यंत चाहिए सेते दिन एक्सटेंड करि परिया गुटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जते दिन चाहिए बट विथ द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट किंतु पार्लियामेंट रे अप्रूवल दरकार फॉर एवरी 6 मंथ प्रति 6 मास थरे पार्लियामेंट रे सेठी अप्रूवल दरकार नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू So previously there is a note mention about the judicial review. तो judicial review previously समझे किसी mention नथिला. But under the 44th Constitutional Amendment Act, provision of judicial review added under the Minerva Mill case. Proclamation of national emergency can be challenged in the court on the ground of malafide or misinterpretation जदि थिबो तो सही कंडीशन में मध्य judicial review लागू हेई परिबो. But originally not explicitly mention नथिला in the constitution रे about the national emergency समय judicial review लागू हेई परिबो ना नहीं. Next revocation केमति हमें करिबा दरकार कोन स्पेशल मेजॉरिटी दरकार बोथ द हाउसेस रे पास होबो आउ गुटे मास भितरे पास होबा दरकार. बट रिवोकेशन कंडीशन रे प्रेसिडेंट जते बेले चाहिबे तांको हिसाब रे से रिवोकेट करि परिबे सेठी पार्लियामेंट रो किछि आवश्यकता नाही. प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी पार्लियामेंट अप्रूवल दरकार पड़े नाही. बट जते बेले लागू होबो तो सेते बेले पार्लियामेंट अप्रूवल रो आवश्यकता पड़िथाय. बट इन द टाइम ऑफ रिवोकेशन देयर इज नो नीड ऑफ पार्लियामेंटरी अप्रूवल. Under the 44th Amendment Act, President must revoke the emergency if the Lok Sabha passes a resolution for disapproving it. तो 44th एटा ऐड हेतला जे प्रेसिडेंट चाहिए प्रेसिडेंट सेटा को बाहर करी रिवोक करि परिबे जदि कैबिनेट सेठी पास होबो लोक सभा रे जदि पास होबो तो एठी राज्य सभा रो सेते किछि भूमिका नाही ऑन द रिवोकेशन रे राज्य सभा रो किछि भूमिका नाही. जदि लोक सभा चाहिबो तो भी रिवोक ही परिबो इफ लोक सभा passes a resolution for disapproving. One tenth of the Lok Sabha member needs to return notice the speaker or president को देबे. या स्पेशल सेशन होबो held within 14 years 14 days भितरे स्पेशल सेशन होबो on the revocation. तो यदि कैबिनेट चाहिबो ताको रिवोक करि पारि पे. तो केते थर हमर इमरजेंसी लागू हेतिला टोटल 3 टाइम्स. आज पन 3 टाइम्स लागू हेछि अंडर 1962 71 एंड 1975. 1962 चाइना वार जो चला पाकिस्तान एंड 1975 इंदिरा गांधी समय तो 3 थर हम नेशनल इमरजेंसी लागू हेछि. देन तो इमरजेंसी परे जो 1975 इमरजेंसी परे गुटे कमिटी सेटअप हेतिला तो चेक करिया जे इमरजेंसी ता ठीक थिला लगेबा ना ठीक नथिला. तो से कमिशन रे हेड के थिले दैट इज द साहा कमिशन. साहा कमिशन सेटअप करा हेतिला ऑन द इंक्वायरी ऑफ 1975 इमरजेंसी एंड डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. आ से जस्टिफाई करथिले जे इमरजेंसी डिक्लेरेशन ताको अनजस्टिफाई करी ले. ओके तो हमें नेक्स्ट क्लास रो प्रेसिडेंट रोल और फाइनेंशियल इमरजेंसी देखिए.